ओके, चलो, आवाज है जी ना, मैम। आ रहा है ना आराम से? ठीक है। यस मैम, क्लियर लेंदी क्लियर। तो नहीं हो रहा? वैसे भी 21 नहीं नहीं का। मैम, ओके। चल रहा है। उस दिन की जो प्रॉब्लम्स थी वो देख ली थी? जी मैम, जी मैम, देख लीजिए। ओके, चलो। यदि कोई टेनेंट जो है वो डिनायल कर रहा है ओनरशिप ऑफ लैंडलॉर्ड से, जी मैम। तो ओनर को क्या रिलीफ है? मैम, द ओनर कैन institute a eviction suit under Section 12, Clause 1, and specifically under Clause C of the MP Accommodation Act. ओके, इफ यू नीड योर हाउस फॉर बोनाफाइड पर्पस, मिस रेसिडेंशियल, जो आपका एरिया होता है या रेसिडेंशियल जो हाउस है, ड्वेलिंग हाउस है, उसको बोनाफाइड पर्पस के लिए लेना है वापस टेनेंट से, तो कौन सी सेक्शन में जो है आप एविक्शन का केस फाइल करेंगे? Ma'am, if I bona fidely require the accommodation for residential purpose, then I will institute a suit under Section 12, Clause 1 E. कौन सा? Ma'am, E clause. ओके, फॉर स्पेशल लैंडलॉर्ड कोई अलग प्रोविजन है या सेम प्रोविजन है? Ma'am, specifically a new chapter was introduced, that is Chapter 3A. So the grounds are mentioned under Section 23 capital A, and the grounds are similarly same for the special landlords. ओके, हु इज स्पेशल लैंडलॉर्ड? Ma'am, special landlords, the list of special landlords are provided under Section 23J of the Act. Firstly, any person who is a retired servant of government or a retired servant of defense services, or secondly, who is a retired servant of any company which was managed and controlled by the government. Thirdly, who is a widow or a divorced woman. Fourth is who is a handicapped person. And fifthly, if a government servant is posted to a place where he is not entitled to government accommodation, or where he is entitled only on payment of penal rent, then he becomes a special landlord under this section. ओके, ग्राउंड्स ऑफ सेकेंड अपील इन सीपीसी? Ma'am, the second appeal under the CPC can only be made on the ground of substantial question of law that is mentioned under Section 100. ओके, व्हाट इज प्लीडिंग? When pleading uh, are provided under Order 6 Rule 1, which provides that a plaint which is made by the plaintiff, whereby he puts all his claim which is arising out of a cause of action, and a pleading also includes a written statement which is presented by the defendant, which is against the and denial of the plaintiff's plaint. ओके, नोटिस अंडर सीपीसी सेक्शन 79 एंड 80 किसके लिए होता है और टाइम पीरियड कितना होता है? Ma'am, if a person desires to institute suit against the government, then he have to give a notice under Section 80 for a period of 2 months before instituting the suit. ओके, हु इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर? Ma'am, proclaimed offender is provided under Section 82 of Code of Criminal Procedure. He is a person against whom a warrant has been issued for arrest, but he is absconding for the purpose of avoiding that warrant. Then a proclamation is issued against that person, and he is required to surrender within 30 days. Then the person is called as proclaimed offender. ओके, समन जो है सीपीसी में जी वो कितने वे में जो है उसको सर्विस ऑफ समन हो सकती है, या जो तामीली होती है वो कितने तरीके से हो सकती है, एक्सेप्ट देन पर्सनल जो तामील होती है या पर्सनल सर्विस ऑफ समन होती है उसके अलावा? मैम, पर्सनल तामीली के अलावा मैम तीन ऐसे मोड्स हैं. फर्स्ट, ऑर्डर 5 रूल 9 में दिया है, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट.
सेकंड है मैम दस्ती समन जो 9 कैपिटल ए में दिया हुआ है, वेयर बाय द प्लेंटिफ इज अलाउड टू सर्व द समन्स. Then comes Rule 17, whereby the summons is affects to the conspicuous part of the house. And then comes under Rule 20, substituted service of summons. ओके, यदि कोई पर्सन प्रिजन में है तो क्या उस पे सर्विस ऑफ समन हो सकता है, और यदि हो सकता है तो कैसे होता है, किस रूल में? Uh, Ma'am, exact rule I am not able to recall, but the service can be made. ओके, अंडर ऑर्डर 5 रूल 24, जो थाने का 24. भारसाधक अधिकारी होता है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ, जो आपका वो रहेगा, ऑफिसर Prison. इंचार्ज रहेगा, पहले उस पे जी. होगी प्रिजन के ऑफिसर इंचार्ज पे, फिर जो है उसको प्रॉपर सर्विस ऑफ समन मानते हैं। ठीक है, जी मैम. एक ये पूछा है कई बार, और एक बार ऑर्डर 5 रूल 25 एडीजे में पूछा है, तो इन दोनों को देख जी लेना। मैम. ठीक है, बिल्कुल. प्लेंट अमेंड हो सकता है। Yes, ma'am. It can be amended by two ways. First is compulsory amendment, which is provided under Order 6, Rule 16. And second is voluntarily amendment, which is provided under Order 6, Rule 17. ओके, जो प्रारंभिक डिग्री होती है, प्रिलिमिनरी डिग्री, उसके कुछ Yes, एग्जाम्पल बताओ। preliminary degree, ma'am. हम्म, Ma'am, can I take a moment to think, ma'am? अच्छा, प्रिलिमिनरी डिग्री होती क्या है? Yes. Ma'am, preliminary decree is passed during the pendency of a trial, whereby only portion of the dispute is determined by the court, and actual adjudication and further adjudication of that suit is still pending. Then it is called preliminary decree. ओके, प्रिलिमिनरी डिग्री के एग्जाम्पल नहीं पता? मैम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी. ओके, ऑर्डर 20 और ऑर्डर 34 में है, ओनली 8 है, मैं वो भेज दूंगी, है ना? जिसे हक शुफा जी होता है, मैम. प्रीएम्पशन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सूट होता है, ये कुछ ही है 8 सूट है जिसमें प्रिलिमिनरी डिग्री जो है वो प्रोवाइड होती है। जी. ठीक है, तो मैं पूरा लिस्ट सेंड कर दूंगी, उसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, जी. व्हाट इज प्रीएम्पशन? Ma'am, preemption is a right which can be exercised by a person who is living at the neighbor of any land, and the owner of that land wants to sell that. Then the first right to purchase that land is to the neighbor, and this right is called as right of preemption. ओके, फ्रॉड वाले केस में कितना लिमिटेशन है अंडर लिमिटेशन एक्ट? Ma'am, मीन्स इफेक्ट ऑफ question ma'am फ्रॉड थोड़ा. एंड मिस्टेक जो है वही पूछ रही हूँ मैं। अच्छा. जी जी. Ma'am, the effect of fraud or mistake is provided under Section 17, and it हम्म, provides that from the date when the person is able to discover that fraud or mistake, a fresh period of limitations shall start from that particular day. ओके, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट से जो नया परिसीमा काल है या न्यू जो है लिमिटेशन कब से स्टार्ट होगा? Ma'am, from the date of signing of that acknowledgement under Section 18, the new limitation period will start. ओके, एक्सटेंशन ऑफ टाइम अंडर लिमिटेशन एक्ट? Extension of time, ma'am. It is provided under Section 5, whereby the condonation of delay application is made by a person showing the sufficient cause for not preferring the appeal or application within the specified period. So the court can grant extension of time. ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मींस प्रिस्क्राइब पीरियड एंड लिमिटेशन पीरियड? Ma'am, both are provided under Section 2J of the Indian Limitation Act. The difference is that the limitation period is provided in the schedule of the Limitation Act, but prescribed period is computed by the application of provisions of the Limitation Act. ओके, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? Ma'am, judicial review is the power given to the higher courts to basically examine any law on the grounds that if the law is made by the parliament and which is in contravention with the part 3 of the constitution,
then in that case, the judicial review can be exercised by the higher courts, ma'am. Order 21 and right to privacy. Is there मीन्स एक जो है नॉर्मल उसका एक डिस्क्रिप्शन बताओ कि राइट टू प्राइवेसी को ऑर्डर 21 में किस जो है हद तक शामिल किया गया है और जुडिशरी का अप्रोच क्या है इस पर्टिकुलर मैटर पे, राइट टू प्राइवेसी पे। Ma'am, right to privacy and order 21 of CPC. नहीं नहीं नहीं, आर्टिकल 21, सॉरी, Article. आर्टिकल 21 जो है, क्योंकि आजकल बहुत होता है ना, किसी ने किसी जी की जी वीडियो लीक कर दी, किसी ने फोटोज कर दिए, कोई किसी के बारे में कुछ भी पर्सनल बोल रहा है। ठीक जी है, जी जी देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म जिसको सोशल प्लेटफॉर्म बोलते हैं हम। जी जी सो जी राइट टू प्राइवेसी और सोशली किसी के बारे में कुछ लिखना या उसकी बहुत पर्सनल चीज को जो है इस तरह से सोशल कर देना, जुडिशरी का जी मैम। अप्रोच क्या है राइट टू प्राइवेसी पे फ्रॉम बिगनिंग, और आप क्या सोचते हो? ठीक है। Yes, ma'am. Starting from the case, ma'am, which I am able to recall is PUCL versus Union of India, in which the phone tapping was challenged by the person that the phone tapping of any person infringes the right to privacy. But at that time, the right to privacy was not recognized by the court as a right of any person. But recently, in the case of KS Puttaswamy versus Union of India, whereby the Supreme Court has introduced and added right to privacy as a fundamental right under Article 21 of the Constitution. But at the present time, ma'am, there is no specific legislation or authority which deals with the protection of right to privacy. And according to my opinion, as social media is widely used in nowadays, there are various platforms and various means by which the personal details are publicized by the person. So there need to be a regulating authority, and there should be strict punishment also introduced under the Indian Penal Code for infringing the privacy of any person. Yes. ओके, ठीक है सरफराज, अच्छा है ना। जी आई विल जी ट्राई कि चलो यदि पॉसिबल हुआ तो कल मॉर्निंग में लूंगी, 11 या 11:30 जी पे। ठीक है, तो थोड़े जी मैम, सेशंस जैसा ज्यादा भी हो जाएंगे। कंफर्टेबल। ओके, जी मैम। ठीक है, अच्छा है, किसी प्रॉब्लम को लेके कुछ है कि नहीं, मुझे कुछ पूछना है करके?